So here we are going to start question answers of chapter number 13, the hostile witness. So question number 1, what was in the case that Charlton put in the cupboard behind this reception desk? क्या था उस सूटकेस में जो चार्ल्टन ने रखा था डेस्क के पीछे, जो रिसेप्शन डेस्क थी उसके पीछे? आंसर, the case that Charlton put in the cupboard behind the reception desk contained stolen weekly wages of workers of Newcastle factory. ये चुराई गई जो मनी थी, चुराए गए जो पैसे थे वो रखे गए थे। वो जो बैग था उसका जो दो लोगों को लूटा था, उनके पैसे लिए थे, वो बैग रिसेप्शन डेस्क के पीछे रख दिया था चार्ल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2, what crime had been committed in Newcastle that afternoon? नंबर 2 आपके पास ये है कि क्या क्राइम हुआ था न्यूकैसल में उस दोपहर? आंसर, there had been a robbery and a murder in that afternoon. उस दोपहर एक कत्ल हुआ था और चोरी हुई थी न्यूकैसल में। क्वेश्चन नंबर 3, why did Detective Sergeant Manning first speak rather coldly to the group of men in the hotel lounge? क्यों डिटेक्टिव सर्जन जो मैनिंग था उसने बहुत ज़्यादा आराम से और ठंडे लहजे में बात की जो लोग बैठे हुए थे लाउंज में, होटल के लाउंज में? आंसर, the detective Sergeant Manning first spoke rather coldly to the group of men in the hotel lounge because he thought the murderer was there. क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पर कातिल भी मौजूद है। Question number 4, briefly explain why Johnson, Carter and Abbott were suspicious of King even before the revolver was found in his room. Question number 4 में ये बताना है कि क्यों जॉनसन, कार्टर, एबर्ट उन सब को किंग पर शक हो गया था। इससे पहले ही कि रिवॉल्वर आए उससे पहले ही शक हो गया था। आंसर, Johnson, Carter and Abbott were suspicious of King because the description of the murderer announced by radio fitted him, as was rather respectable looking person. He had medium size and he was reluctant to hand over keys to Manning, so they thought that he was real murderer. वो इसलिए क्योंकि जो हुलिया एक कातिल का बताया गया था बिल्कुल उस तरीके से का हुलिया था, किंग का मीडियम साइज़ था और बिल्कुल वही अंदाज़। उसके अलावा जो चाबियां जब मैनिंग ने मांगी थी तो किंग ने देने में थोड़ा सा टाइम लगाया और बहुत रूडली बिहेव किया, इसलिए सबका शक किंग की तरफ चला गया। Question number 5, at what point in the play does the audience realize that Charlton is lying in order to throw suspicion on King? कौन से पॉइंट पर आकर ऑडियंस को लगा कि चार्ल्टन झूठ बोल रहा है और वो जस्ट शक डालना चाह रहा है किंग के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में? आंसर, the audience began to realize that Charlton is lying on order to throw suspicion on King when King stated that he had picked up Charlton on the way. ये उस वक्त हुआ जब किंग ने ये बात कही कि मैंने चार्ल्टन को रास्ते में से लिया था, पिक किया था, उसने लिफ्ट ली थी किंग से, और यहाँ पर लोगों का शक चार्ल्टन की तरफ चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, Why did Manning never believe that King was the murderer? मैनिंग को क्यों कभी यकीन नहीं आया कि किंग जो है वो कातिल हैं? आंसर, मैनिंग never believed that King was murderer because King had committed the crime he could have escaped in his car to West. वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि किंग जो एडिनबर्ग से आ रहे थे तो उन्होंने न्यू कैसल का कोई रास्ता नहीं लिया था, अगर वो लेते तो पहुंच नहीं पाते। He could not have reached the White Hart Hotel at the time when he had reached. By driving his car fast, he could have got through from Newcastle to Darlington before the police started checking. और अगर उनकी ड्राइविंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती तो ही ऐसा पॉसिबल होता कि वो न्यूकैसल से डार्लिंग तक पहुंच सकते जब पुलिस स्टार्ट करती इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले ऐसा पॉसिबल था ही नहीं, इसलिए उन लोगों का शक किंग की तरफ गया ही नहीं। Question number 7, briefly explain what was in Manning's mind when he said, "Your story really interests me, Mr. King." आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि
क्यों मैनिंग ने ये कहा और मैनिंग के माइंड में क्या चल रहा था जब उसने बोला कि आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मिस्टर किंग को कहा। आंसर, व्हेन मैनिंग सेड दैट मिस्टर किंग स्टोरी इंटरेस्टेड हिम, इन फैक्ट ही वॉज क्वाइट श्योर दैट चार्ल्टन हैड कमिटेड मर्डर। ये इस वक्त कहा मैनिंग ने जब उसे ये आइडिया हो गया कि चार्ल्टन ने मर्डर किया है। Question number 8. Why was Manning certain of Charlton's guilt after peering closely into his face? क्यों मैनिंग को उस वक्त थोड़ी बहुत शर्मिंदगी वगैरह कुछ फ़ील नहीं हुई जब उसने बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा चार्टन की तरफ? आंसर, मैनिंग was certain of Charlton's guilt after peering closely into his face because he had been traces of artificial hair on Charlton's upper lip. मैनिंग उसको कंटिन्यूसली घूर रहा था और देख रहा था गौर से बहुत ज़्यादा क्लोजली इसके फेस को, वो इसलिए क्योंकि चार्टन्स के लिप पे, अपर लिप्स पर अभी तक वो जो डार्क मुस्टेजेस थी, आर्टिफिशियल मुस्टेजेस, उसके कुछ ट्रेसेस बाकी थे, निशानात बाकी थे। क्वेश्चन नंबर 9. वाई वॉज मैनिंग इंटरेस्टेड इन द मेक एंड एज ऑफ किंग्स कार? क्यों मैनिंग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था किंग की एज में और साथ साथ उनकी कार में? आंसर, मैनिंग वॉज इंटरेस्टेड इन द मेक एंड एज ऑफ किंग्स कार बिकॉज ही हैड लर्न दैट द क्रिमिनल हैड एस्केप्ड इन ए स्पोर्ट्स कार। वो इसलिए क्योंकि मैनिंग को आइडिया था कि क्रिमिनल एक स्पोर्ट्स कार में ही यहाँ तक पहुँच सकता है इतने जल्दी, इतने कम वक्त में, इसलिए वो किंग से उनकी गाड़ी की एज और वो कितनी पुरानी है इन सब बातों को जानने में बहुत इंटरेस्टेड था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10. वाई डिड चार्ल्टन गिव अवे द प्लेस वेयर द केस वॉज डिपॉजिटेड फॉर विच ही हैड कमिटेड मर्डर? क्यों चार्ल्टन ने वो जगह छोड़ दी जहाँ पर उसने मर्डर कमिट किया था और उसने क्यों अपना सूटकेस छुपा दिया? Answer, Charlton gave away the place where the case had been deposited because he wanted to throw away suspicion on Mr. King. वो इसलिए क्योंकि वो अपने ऊपर कोई भी शक नहीं लाना चाहता था और वो चाहता था कि सारा जो इल्ज़ाम है वो मिस्टर किंग पर लग जाए, और वो इस चीज़ से बचने के लिए उसने सूटकेस को भी छुपा दिया था। Here we are going to start exercises of chapter number 13. So first exercise number 72. Number 1, this is the first paragraph of an essay on entertainment and the first sentence of the second paragraph. Complete the second paragraph. यहाँ पर आपके पास इस एक्सरसाइज में एक पैराग्राफ गिवन है और ये बेसिकली एक ऐसे है एंटरटेनमेंट पर, टॉपिक है एंटरटेनमेंट। अब पहला पैराग्राफ आपके पास गिवन है पूरा, दूसरे पैराग्राफ का एक सेंटेंस गिवन है और उस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है अपने वर्ड्स में, मतलब पूरा एक ग्रुप बनाना है सेंटेंसेस का ताकि वो एक पैराग्राफ बन जाए, बिल्कुल एक तरतीब के साथ जैसे हमारे पास पहला गिवन है। पहला है, older people often affirm that the modern world is suffering from too much entertainment, or at least from too much ready-made entertainment instead of doing things for ourselves. The tendency of nowadays is to sit and listen to or watch a few artists and athletes doing things for us. The gramophone, the radio, the cinema and the television are recent inventions which have entirely changed the pattern of entertainment in modern world. Modern means of travel too have made it possible for large number of people to assemble in one place at one time to watch open-air sporting events. In this altogether a good thing. तो ये आपके पास है फर्स्ट पैराग्राफ जो कि आपको मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड की जो एंटरटेनमेंट है उसके बारे में कुछ डिस्कस किया गया है यहाँ पर। अब हम आगे सेकंड पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। आगे हमारे पास गिवन होगा सेंटेंस, उस हिसाब से हम सेंटेंस और बना के एक पैराग्राफ बनाएंगे। In the old days, people had to provide their own amusements. ये आपके पास दूसरे पैराग्राफ के लिए पहला सेंटेंस गिवन है। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास की सेंटेंस है। बिल्कुल इस तरीके से हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है
अब दूसरा आपके पास एक तो ये हो गया और दूसरा आपके पास है ड्रॉ अप अ पॉसिबल प्लान फॉर द रिमेनिंग पैराग्राफ ऑफ द एसे। अब जिस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड बनाओगे इस तरीके से आपने इस एसे को पूरा करना है और पैराग्राफ्स को ऐड करके। लेकिन हम चलते हैं पहले सेकंड वाले पैराग्राफ को कंप्लीट करने की तरफ। So here we are going to start second paragraph. In the old days, people had to provide their own amusements. They did a lot of things back in the days. Kids went out and play all day. Sports, playgrounds, outside stuff. Adults worked and housewives cleaned and cooked, playing games of cards, dancing, talking, meeting with friends, sitting on the front porch and talking to passers-by, reading. There are some of the things that can be done for entertainment without the need of today's high-tech machines. पहले वाले में आपको मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया गया था, अब इसमें आपको एक जो सेंटेंस था की सेंटेंस उसके हिसाब से आपको जो पुराने लोग थे उनकी जो एंटरटेनमेंट थी उसके बारे में डिस्कस करना था। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पैराग्राफ को मेंशन किया है बिल्कुल एक तरतीब बनाकर जो जो एंटरटेनमेंट थी उन सब को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 72। एक्सरसाइज नंबर 73 Number 1. This is the last but one paragraph of an essay on methods of travel and the first sentence of the last paragraph, the conclusion. Complete the last paragraph. यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, ये जस्ट आपको हिंट गिवन है और अब आपने एक लास्ट पैराग्राफ को एक आपके पास लाइन गिवन है, वो बेसिकली कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन को आपने पूरा करना है, मतलब ये लास्ट पैराग्राफ की एक लाइन गिवन है। सबसे पहले तो एक हिंट है, पैराग्राफ गिवन है, बट द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रैवल इज़ ऑफ कोर्स द एरोप्लेन। नथिंग इज़ मोर मार्वलस in this age of marvels than the way in which air travel has developed in the last 50 years. From the early fragile machines of wood and canvas to the gleaming metal monsters of today, from a bare grass field to a modern airport with its miles of concrete runways, its huge hangars and its complicated devices for ensuring the safety of aeroplanes in all kinds of weather. Exercise number 73. Number 1. This is the last but one paragraph of an essay on methods of travel and the first sentence of the last paragraph, the conclusion. Complete the last paragraph. यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, ये जस्ट आपको हिंट गिवन है और अब आपने एक लास्ट पैराग्राफ को एक आपके पास लाइन गिवन है, वो बेसिकली कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन को आपने पूरा करना है, मतलब ये लास्ट पैराग्राफ की एक लाइन गिवन है। सबसे पहले तो एक हिंट है, पैराग्राफ गिवन है, बट द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रैवल इज़ ऑफ कोर्स द एरोप्लेन। नथिंग इज़ मोर मार्वलस in this age of marvels than the way in which air travel has developed in the last 50 years. From the early fragile machines of wood and canvas to the gleaming metal monsters of today, from a bare grass field to a modern airport with its miles of concrete runways, its huge hangars and its complicated devices for ensuring the safety of aeroplanes in all kinds of weather. Now you can fly around the world in a few days. Soon you will be able to fly from Europe to America and back in the mere 12 hours. With all these rapid means of travel at our disposal, the world is truly growing smaller. अब आपके पास जो फर्स्ट में पैराग्राफ गिवन है ये तो आपके पास लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद कंक्लूजन की एक लाइन आपके पास गिवन है। अब कंक्लूजन को आपने कंप्लीट करना है, तो मैंने आगे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंक्लूजन। और सेकंड जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अप अ पॉसिबल प्लान फॉर द फर्स्ट 3 पैराग्राफ ऑफ द एसे। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ गिवन है, तो इससे पहले जो 3 पैराग्राफ हैं उनको भी मेंशन करना है, खुद से लिखना है। तो सबसे पहले कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन: ट्रैवलिंग हैज़ बिकम ईजियर ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन. Traveling helps a person to become down to the earth and realistic. Traveling is the best way that one can educate oneself about the ways of the world.
ये कंक्लूजन है। आपके पास एक लास्ट लाइन गिवन थी, उसके बाद जो आगे कंटिन्यू है पैराग्राफ, वो ये है जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ड्रॉ अप अ पॉसिबल प्लान फॉर द फर्स्ट 3 पैराग्राफ ऑफ द एसे। मतलब 3 और पैराग्राफ जो स्टार्टिंग के हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट पैराग्राफ गिवन था और हमने कंक्लूजन बनाया, तो उससे पहले जो 3 पैराग्राफ हैं उन्हें भी हमें मेंशन करना है। तो वो कुछ इस तरह हो सकते हैं। ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज़ दैट वन कैन हैव। ट्रैवलिंग ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर. It satisfies one's sense of beauty and gives one's a feeling of power over the things around him. It also helps one to see someone else's point of view. It opens up many new worlds to the traveler. ये आपके पास हो गया पहला पैराग्राफ ऐसे का। नाउ सेकंड, traveling provides adventure and adventure keeps us from growing old. As long as there is something to look forward to, the mind remains young and healthy. Travel brings people together. One comes into contact with many people of different lands and customs, and this leads to a great deal of understanding between them. A man who has traveled a lot is more natural and likely to understand the other's point by view with more ease and open mindedness. ये आपके पास हो गया second paragraph. Now, the third paragraph of the essay, traveling by car is convenient because it can take us quickly wherever we want to go at the moment. Another popular means of transportation is a bus. Traveling by bus may sometimes be a little uncomfortable, but the situation is gradually improving. Another way is traveling by train and by aeroplane. अब आपके पास ये थर्ड पैराग्राफ था। थर्ड पैराग्राफ के बाद आपके पास एक लास्ट पैराग्राफ है जो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में गिवन है। तो ये आपके पास हो गया पूरा एक एसे जो मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 73. So here we are going to start last exercise of this chapter, exercise number 74, which is write plans for essays on the following subjects, 5 paragraph each. यहाँ पर आपके पास 5 टॉपिक्स गिवन हैं और हर टॉपिक पे आपने 5 पैराग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहला है माय आइडियल समर हॉलीडे, नंबर सेकंड अ कैपिटल सिटी, नंबर थर्ड द सिनेमा एंड द थिएटर, नंबर 4 मॉडर्न इन्वेंशंस, नंबर 5 न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक मेंशन किया है और सिलेक्ट किया है वो है मॉडर्न इन्वेंशन। तो ये आपके पास एक मेथड हो जाएगा ऐसे लिखने का। सबसे पहले modern invention have made life more comfortable than what it was before. More and more new things are being made in all countries throughout the world to make life even more comfortable. In the past, men had great difficulty in plugging their lands to grow food, but today giant machines are used to plug thousands of acres of land. As a result, more food can be grown in a shorter time than was possible before. Food grown in one country is sent to another country where it is needed badly. To carry the food, motor vehicles, steamships, and various other means of transport have been invented. Shortage of food in one place no longer causes anxiety as it can be brought from another place within a very short time. ये हो गए आपके पास 2 पैराग्राफ ऐसे के। थर्ड पैराग्राफ, the invention of the means of transport has also made it possible for people to work in places miles away and children can attend schools in distant places. In the past, this was not possible. The children can attend school in distant places. In the past, this is what it is impossible. The children of today are therefore better educated than those of the past. Invention of the means of transport has also increased human activity. A man now go to several places and do a variety of things in a day's time. Now the fourth and fifth paragraph. At the same time, however, modern inventions have caused many deaths and much sorrow to many people. Motor vehicles and other machines have killed hundreds of people. Many have lost their hands or legs, and accidents continue to occur in ever increasing numbers. Yet modern inventions have made the world what it is today.
The list of modern invention is very long, for it embraces the whole sphere of human knowledge. The people of every country should benefit by modern inventions, but they should at the same time see to it that it is not used for destruction. अब यहाँ पर जो आपके पास लास्ट पैरा है वो एज अ कंक्लूजन यूज़ किया गया है, क्योंकि वो फिफ्थ पैरा है, लास्ट पैरा है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग स्टार्ट के जो पैराग्राफ थे वो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस से मैंने मैनेज किए हैं, क्योंकि स्टार्ट में पहले इंट्रोडक्शन दे दिया मॉडर्न इन्वेंशन का कि वो होती क्या हैं, उसके बाद फिर उसके एडवांटेजेस बता दिए, उसके बाद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता दिए, और लास्ट में उसको रिज़ल्ट बता दिया, सम अप कर दिया, कंक्लूजन बता दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 74।